Hello, Bacho. Let's first read the question. The question says that a volume of metal in a hollow sphere is constant. If the inner radius is increasing at the rate of 1 centimeter per second, find the rate of increase of outer radius when the radii are 4 centimeter and 8 centimeter respectively. Right? So, पहले key concept देख लेते हैं. The key concept of the question is derivative as rate of change. Right? Now, as we know, rate of change is that, sorry, this is rate of change. The rate of change of function is defined when one variable is changing with respect to another one, right? Suppose if you take y, which is changing with respect to with respect to x, then we can write dy by dx, right? Means x के respect से क्या change हो रहा है? Y change हो रहा है. So this is dy by dx, right? Now, consider here the volume of metal in a hollow sphere. So पहले clear करते हैं hollow sphere क्या है, right? So hollow sphere is sphere का जो cross section है वो ऐसा दिखेगा. This is something in round. Sorry, this is right. But in hollow sphere there is one gap in between, right? This is hollow sphere. So what they ask, तो यहाँ पे होलो स्फीयर में ये जो ये एरिया होगा वो क्या होगा? ब्लैंक होगा. दिस इज टोटली ब्लैंक. मीन्स जो भी कंसिडरेड एरिया है वो क्या होगा? दिस वन. ये जो कंसिडरेड एरिया होगा, राइट? सो ये हमारा, सॉरी, ये कंसिडरेड एरिया होगा. जो ये होगा वो कंसिडरेड एरिया होगा. बाकी जो ये मिडल है वो क्या होगा? ब्लैंक होगा. दिस इज होलो स्फीयर, राइट? नाउ they said that volume of metal in hollow sphere is constant if inner radius is increasing at a rate of 1 centimeter per second. So let's define inner radius and outer radius of this hollow sphere. So suppose inner radius means the inner circle radius, that is suppose take r, and outer radius suppose take capital R, right? Define करते हैं. Let inner radius be small r, right? And outer radius be capital R, right? Now, as we know that volume of sphere is V is equal to 4 by 3 pi r radius cube, right? But यहाँ पे क्या होगा? outer radius capital R minus inner radius होगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए? होलो स्फीयर का जो गैप है उसकी उसका वॉल्यूम चाहिए, राइट? सो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम फॉर होलो स्फीयर, ये क्या मिलेगा हमें? v इज इक्वल टू 4 by 3 पाई आउटर रेडियस क्यूब माइनस
smaller radius or inner radius q, right? Now, there are certain quantities that our values are given that inner radius is increasing, means rate of change of inner radius is given, right? So d small r upon dt, that is given, right? So consider the given data, that is given data क्या है, d small r upon dt, वो क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। सेकेंड क्या दिया गया है, find the rate of increase of outer radius, means d कैपिटल R अपॉन dt, वो हमें फाइंड करना है। स्मॉल दिया गया है और कैपिटल वाला जो रेट है, वो कैपिटल R वाला जो रेट है वो फाइंड करना है। when the radius radii are 4 centimeter and 8 centimeter, so we can consider as larger radius is radius of outer sphere, that is 8 centimeter, and smaller is 4 centimeter, right? And so to find the rate of change, we need to take the derivative of this function, right? So take the derivative. In equation with respect to t, right? यहाँ पे t के रिस्पेक्ट से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना होगा, राइट? सो वो डेरिवेटिव आएगा dv बाई d कैपिटल V अपॉन dt, 4/3 पाई, वो कांस्टेंट टर्म, सो वो एज इट इज, राइट? इन ब्रैकेट कैपिटल R क्यूब, t के रेस्पेक्ट से है तो वी नो द पावर रूल इन डेरिवेशन, दैट d बाई डी एक्स, एक्स रेस टू n, देन n आगे x रेस टू n माइनस वन, सो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आगे r स्क्वायर, बट r का t के रेस्पेक्ट से d r अपॉन डी टी, माइनस सेम फॉर इनर रेडियस 3 small r, this is small r square d small r upon dt, right? Now इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4/3 पाई, 3 दोनों में कांस्टेंट है, सो बाहर निकाल रही हूँ वो, तो अंदर आएगा कैपिटल R स्क्वायर d कैपिटल R अपॉन डी टी माइनस स्मॉल r स्क्वायर d r अपॉन डी टी, दिस इज ब्रेक इट ओवर, राइट? 3 कैंसल। एक और डेटा गिवन है that volume of metal in hollow sphere is constant, right? So we know that the constant का डेरिवेटिव क्या होगा, सपोज x यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, पर c इज कांस्टेंट तो डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, मीन्स यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, जीरो, राइट? क्यों, बिकॉज dv अपॉन डी, बिकॉज जो ये है कांस्टेंट है, सॉरी, जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, राइट? तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट? सो दिस यहाँ पे मिलेगा हमें आगे 4 पाई, ये 4 पाई अंदर दे देती हूँ तो ये क्या आएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी माइनस 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये जो टर्म है माइनस वाला उस साइड
माइनस साइड मीन्स जीरो साइड भेजू तो 4 पाई कैपिटल आर डी कैपिटल आर अपॉन डी टी दैट इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, राइट। यहाँ पे 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। जो वैल्यूज गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो रिमेनिंग वैल्यू उसको फाइंड करते हैं, राइट। सो यहाँ पे कैपिटल आर क्या था 8, स्मॉल आर क्या था 4 एंड डी आर अपॉन डी टी क्या था 1 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर मीन्स 8 स्क्वायर दैट इज 64, राइट, इनटू कैप मीन्स आउटर रेडियस का तो हमें रेट फाइंड करना है, सो दैट इज डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू स्मॉल आर they are 4 square that is 16 into this is 1, so यहाँ पे आएगा dr upon dt that is 16 divided 64, right। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। This is the solution of required question. I hope the solution helped you. Thank you.